Good morning, team. Grindwell Norton Abrasive inaugurates its paper maker plant in Bangalore to manufacture paper-based abrasive product in Bangalore. CAMS and IIT Madras launch FinTech Innovation Lab to focus on building industry-related ready technology solution for financial sector. Midani has set up a key facility for national importance, wide plate mill at its existing Hyderabad plant with an investment of around 500 crores for rolling slabs of various alloys. And the plant will be inaugurated today by the President of India. EC My Trip introduces its special program, EMT Family, for its shareholders. So the shareholder should be 15 days old in the system. Then automatically they get a membership, EC My Trip, using their mobile app, they have to sign in. L&T Construction has been awarded a significant contract, that is 1,000 to 2,500 crores for its water and effluent treatment business for Government of Tamil Nadu, funded by Asian Development Bank. Masgonda, Director of Finance, he was in television. So, Government of India has planned for 84,000 crores of defense spending. In that order, he gave an update that only 3,000 crore is where they are eligible to bid. And he also mentioned about 43,000 crores of order for P-75-1 submarine project. The bidding was likely to happen in April, May. Now it has been postponed to August 2023. And the foreign partner is onboarded, is what the Director of Finance has said. So this is very positive for defense, and Masgondog for a long-term investment is still very good. Tata Steel receives first All India license to produce Corten steel to reduce import of shipping container from China. Positive for Tata Steel. Advent International picks up 50.1% stake in Suvan Pharma for 6,313 crores. And Advent now has to launch an open offer for 26% stake. So I think this is positive for the stock. Siemens bagged 26,000 crore order deal from railways to supply electric locomotive for 1,200 loco and will be supplied for 11 years. And Siemens will be responsible for maintenance for 35 years. And the whole unit will be used for this, and it is a very old unit. So it will take 2 years for refurbishing the unit. After which the construction and manufacturing will start from this unit for Siemens. And government made one important announcement of free rice for 81 crore people. So more finer detail has come. The outlay will take 2 lakh crore for a year, but other subsidies for other schemes will go away. So it is not a major out of pocket expenses for government, but it will have a clear implication on many things. Tata Motor and Delhi Transport Corporation signs a definitive agreement with Tata Motors for operating 1,500 EV buses, 12-meter AC bus, and with low floors, and it will cover supply, operation and maintenance for these buses for 11 years. IB Real Estate has sold 100% stake in subsidized subsidy Juvent Estate Limited to Dani Services, and at a price value of 240 crores. The total land parcel is 35 acres approximately in 104 Dwarka Expressway, Gurgaon, Haryana. So it should be positive for IB Real Estate.
With that, over to you, team. या थैंक यू सैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे कैंप्स ने आईआईटी मद्रास के साथ एक फिनटेक उन्होंने प्लेटफॉर्म रेडी किया है। सो दिस वुड बी, और बेसिकली फिनटेक सेक्टर को आगे ले जाने के लिए जाता है। प्रेमल नॉर्टन ने भी एक पीको मीको फैसिलिटी बेंगलुरु में डेवलप किया है, और ये बेंगलुरु में इसका ये पहला फैसिलिटी रहेगा। नेक्स्ट है मिधानी ने भी एक रोलिंग प्लांट स्टार्ट किया है वेरियस अलॉयज के लिए, और ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस भी दे सकती है। इसके बाद देखेंगे एल&टी को एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है 1000 से 2500 करोड़ का, बेसिकली वाटर एफ्लुएंट सर्विसेज के लिए है, और तमिलनाडु में ये करेंगे, और एडीबी बैंक इसे फाइनेंस करेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मजगांव डॉक के जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है उन्होंने कहा कि 84,000 करोड़ वो प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का, उसमें से 3,000 करोड़ का उनके पास है, और 43,000 करोड़ का P-75 सबमरीन को ऑर्डर मिला है, जिसकी बिडिंग अप्रैल और मई में होने वाली थी, बट उसे पोस्टपोन करके अगस्त 23 को कर दिया है, और इसमें एक फॉरेन पार्टनर भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव न्यूज है मस्काउट डॉक के लिए। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये एक अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है स्टॉक। टाटा स्टील ने कहा कि इनकी जो कॉटन स्टील के शिपिंग कंटेनर्स है उसका भी हमने वो स्टार्ट कर दिया है, चाइना से ये कंटेनर्स निकल रहे हैं। नेक्स्ट एडवेन इंटरनेशनल ने सुवेन फार्मा में 6,313 करोड़ का स्टेक बाय किया है, तो अभी के लिए ओपन ऑफर लिखेंगे एडिशनल 26% स्टेक बाय करने के लिए। सो ओवरऑल देखे जाएंगे तो सुवेन फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सीमेंट्स को भी रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 26,000 करोड़ का, 1200 लोकोमोटिव वो बनाएंगे अगले 11 साल के लिए, और इसे मेंटेनेंस करेंगे नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए। दाहोद का प्लांट उनका जो गुजरात का प्लांट है और सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है, तो इसको पहले वो रिफर्बिश करेंगे और मेंटेनेंस के बाद ये प्लांट एक्टिव होगा। सरकार ने भी ये कहा है कि वो लोगों को 81 करोड़ पीपल को फ्री राइस देंगे, तो इसके अगर देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का आउटगो रहेगा, बट वो कुछ सब्सिडीज कम करेंगे, तो ओवरऑल नेट ये ज्यादा इसमें सरकार अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगी। टाटा मोटर्स ने भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ 1500 ईवी बसेस का एक डील साइन किया है, और ये 12 मीटर की लो फ्लोर बसेस है, और ये सप्लाई करेगी दिल्ली मोटर्स को। आइबेरिया स्टेट ने भी अपने एक स्टेक सेल किया जुवेल प्रेस्टीज को धनी सर्विसेज के लिए, जो कि 250 करोड़ के लिए है। 35 एकड़ का एरिया लैंड पार्सल है हरियाणा में। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर पे एक अपडेट है। आईटी सेक्टर ने कहा कि टोटल अगर देखा जाए तो 17,979 एम्प्लॉयज को लेड ऑफ किया है, 52 इंडियन स्टार्टअप्स, और ग्लोबली देखा जाए तो 1,35,000 प्रोफेशनल्स को फायर किया है। बेसिकली ये फंडिंग की स्लो डाउन चलते ही ये सब ले ऑफ्स देखे गए, बट हमें लगता है कि बट जो नीश सेक्टर है, जो ग्रोइंग सेक्टर है, वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, और वहाँ पे अभी भी वो हायरिंग चल रही है। सो ग्लोबल अगर हम देखेंगे ग्लोबल आईटी के चैलेंजेस रहते हैं, बट हमें लगता है नेक्स्ट ईयर हायरिंग वापस आ सकती है, और जो स्पेशल डिजिटल स्किल्स है वहाँ पे सबसे ज्यादा बूम रहेगी। सो कभी इसके चलते हम अभी भी हमें लग रहा है इन्फोसिस एचसीएल टेक जो कि लार्ज कैप सेक्टर में आते हैं बेटर प्लेस है, और ये जो मैक्रो चैलेंजेस को आराम से हैंडल कर सकते हैं, और कॉस्ट जो इनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसे भी हैंडल करते हैं। सेकेंडली देखेंगे बैंकिंग में भी एट्रिशन लेवल देखा जाए तो 25% देखा गया है, जो कि फर्स्ट टाइम था 2022 में। बीएफएसएस स्पेस और लाइफ इंश्योरेंस में भी हमें बहुत सैचुरेशन देखा गया 47% और 33% जो कि जनरल इंश्योरेंस में भी। और डोमेस्टिक बैंक्स में भी हमें एट्रिशन लेवल अभी भी कंटिन्यू हो रहा है 31% में, और फिनटेक्स में देखा जाए 27% में। सो हम देख रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एट्रिशन लेवल के साथ, और उन्होंने बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को दिए है स्टार्टअप्स और फिनटेक्स के चलते। बट हमें लगता है कि जो बड़ी बैंक है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये अच्छे से मैनेज कर पाएगी, अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली रीस्किल और अपस्किल कर रहे हैं, तो कि एम्प्लॉयज उनकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ पाए और ज्यादा उनको मटेरियल इम्पैक्ट अपने कस्टमर और सर्विसेज को अपने सर्विसेज और कस्टमर्स को देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनटीपीसी ने एक एमओयू साइन किया है टेक्नीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि सब्सिडरी इटाली बेस्ड मरीन टेक्नीमेंट के लिए, और ये जॉइंटली एवेल्युएट और एक्सप्लोर करेगी, जो कि डेवलप करेगी कमर्शियल स्केल का ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन। स्पाइसजेट के शेयर होल्डर्स ने कहा कि वे रीअपॉइंट कर रहे हैं अजय सिंह को, जो कि अडॉप्ट करेंगे हाँ डायरेक्टर एडॉप्शन में जो उनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स है FY21 का मार्च 31 मार्च 22 में। टाइम टेक्नोप्लस ने ये भी कहा कि उन्हें एक ऑर्डर मिला है 75 करोड़ का, जो कि अडानी टोटल गैस से मिला है। ये सप्लाई करेंगे सीएनजी कास्केट्स, और ये टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर बनाएंगे 2023। एचईजी की ये अपडेट है कि उन्होंने एक उनकी जो होली ओन सब्सिडी टीएसीसी को उन्हें एक ग्राफाइट एनोड लिथियम आयन सेल का कंपनी ली है।
नेक्स्ट देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कहा है कि उन्होंने परचेज किया लैंड पार्सल 62 एकर्स का जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और ये डेवलप करेंगे प्लॉटेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। नोएडा अथॉरिटी ने भी एक इशू किया रियल एस्टेट डेवलपर जो कि डीएलएफ है 235 करोड़ का कंपनसेशन वो देंगे प्रीवियस ओनर्स जो कि लैंड पार्सल जिसके ऊपर जो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया बना गया है। 10,683 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो पीएलआई है वो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रही है और ये स्कीम अगर देखा जाए तो 1536 करोड़ का अप्रूवल लेटर्स भी इशू हो गए 56 एप्लीकेंट्स को जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। आलम फार्मा ने भी कहा कि उन्हें उन्हें फाइनल अप्रूवल मिल गया यूएसएफडी से जो कि जेनेरिक फ्लू वेस्ट्रेन इंजेक्शन और यूज करेंगे बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए रहेगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट को रिड्यूस करने के लिए जो कि लाइसेंस फीस है और कंट्रीब्यूशन जो कि यूनिवर्सल ग्लोबल ऑब्लिगेशन फंड में। सो ये रिकमेंडेशन देगा 23-24 के बजट के लिए। इसके अलावा हम वो एक रिफंड सीख कर रहे हैं 32,000 करोड़ का इनपुट टैक्स technical and derivatives update. In yesterday's trading session, if you see the markets after seeing a bloodbath on Friday's trading session was a more of a greener session. Index opened on a negative side, but 17,800 was a very crucial support. And from those levels, if you see the index rallied toward 18,000, this was more of an oversold nature when the markets and the oscillators were very deeply oversold. So this was more like a technical bounce in the index. And now the key hurdle would be 18,200, which is the 10 EMA zone. And 50 SMA is also now placed over there. So this would be acting as a key hurdle for the index moving forward. If index moves over 18,200 zone, then we can again climb towards 85 and 18,600. Or else if we go and head back towards 18, if we retreat from 18,200, then again we could test 17,800 and we could slide towards 17,600 also. And on the sectoral front, if you see them, PSU banks and private banks and real estate were leading, and metals also saw a rebound from the lows. But if you see then healthcare and pharmaceuticals, which were trading positively on the Friday session, were beaten down on the Monday session. So till 17,800 is now, if you can see as a major support, 17,800 is hold, and we should use as a buy and decline strategy. Secondly, if you see in the Bank Nifty also formed an bullish engulfing candlestick pattern, and it rallied near about 1100 odd points. It also bounced from the supports on the 41,600, 41,500, which was acting, and it has made a retest of its previous tops also, which had given a breakout of 41,600. Now 41,600 would be crucial for the Bank Nifty, but if we see then further strength could be attained if Bank Nifty closes over 43,000 levels, and 43,000 would be key decider for Bank Nifty. And stocks to be watched out are the Axis and ICICI Bank. These two stocks were not so much in the decline when the market was falling. So they were able to hold and they started moving higher when the market index fell. So on the derivatives front, if you see, we witnessed a short covering due to 2.7%, which was a reduction of 0.3 million shares. PCR was a jump from the oversold territory from 0.72 to 0.916. PCR is below 1. It should move above 1 so that we could get a confidence in the index. And the options front, if you see for the Nifty, 17,818,000 strikes show new addition, that is addition of 2.65 and 2.66 million shares. So we could see a good base over this levels. And on the call side, if you see 18,300 and 18,500 would be acting as a hurdle for the index with the addition of 0.82 and 0.47. Similarly, in the Bank Nifty also witnessed short covering to a tune of 3%, and the PCR jumped drastically in Bank Nifty from 0.70 to 1.29. So Bank Nifty is giving a good sign and is leading the index also. And again, in the put options, if we see 42,300 and 42,500 are the strikes where there we could see addition. And on the bigger side, in the call side, we can see 42,700 and 42,800 zones. So on the rollover basis, when the expiry is coming, we can see rollovers are kindly more in line at 38% compared to 39% E minus TSS. And on the Bank Nifty is also at 46% with compared to 44% in the same month previous expiry. So coming to the derivatives FIs data, then FIs also had reduced their short position by 10,000 contracts. So they are now net short by 10,000 only, and their long short ratio is still at 47%. And in the cash market, if we see, then they have sold their position by 500 crores, while DIS has bought to the tune of 1,285 crores. So coming to the SGX today morning is showing a gap of 55-60 odd points. If we move 18 above 18,100, then 18,200 should be the likely hurdle zone where Nifty could face over here. So that's it from mine. I'll hand over to Devangsa for more details. Thank you. Thank you, Hitendra. Good morning, all. So I would be talking on fundamental news. So one news is on Maruti Suzuki. So Maruti Suzuki is aiming for record high production in FY24
on the back of 4 SUV launches. And the company have said that its vendor to prepare 2.5 million units in next fiscal. If the company meets the target, it would take the volume growth to more than 25%, which would be the fastest growth in the last decade. Hence, this news is a positive development. However, we have a hold rating on the stock with a price of 10,047. In terms of IT sector, as of December, 17,989 employees were laid off, and which is from 52 Indian startups. Globally, 135,000 tech professionals are fired. So tech sector overall is under pain. These layoffs are happening primarily due to funding slowdown. However, startups which have niche skills are on the rise. Despite these global challenges, Indian IT is expected to continue to hire next year. And on the back of demand for specialized digital skills, we stick to Indian large caps. So we believe that large caps like Infosys, TCS, these guys will be the key beneficiary, as they will be able to take the benefit of cost takeout opportunities. Another news is on banking. In banking, attrition levels have accelerated, and the total departure is around 25% in the first 9 months of 22. Within BFSI, life insurance has witnessed the worst attrition at 47%, followed by general insurance at 33%. Domestic bank continues to have a record high levels of attrition at 31%, followed by fintech at 27%. All the banks, NBFCs are struggling at the attrition levels. However, we believe that this will have a limited impact on banks which are very large, especially HDFC and ICICI Bank. So because they have continuously reskilled and upskilled their employees, and they can replace their employees easily. So we are positive on HDFC and ICICI Bank from that perspective. Another news is on NTPC. The company signed an MOU with Technomint Private Limited, an Indian subsidiary of Italy-based Marine Technoprint Group. So to jointly evaluate and explore the possibility to develop commercial scale green methanol production. Second news is on SpiceJet. The shareholders have approved the reappointment of Ajay Singh as the director. Time Technoplast, the company has received another order of worth rupees 75 crores from Adani Total Gas for supply of CNG cascades. This will start from January 2023. And lastly, on HEG, the company has incorporated a wholly owned subsidiary TACC Limited for manufacturing of graphite anode for lithium-ion cells. I would now hand over to Vikas for further updates. Thank you, Devang sir. Good morning, everyone. Further news updates on realty firm Godrej Properties on Monday said it has purchased about 62 acres of land in Kurukshetra, Haryana to develop a plotted residential project. The Noida authority has issued a notice to real estate developer DLF to pay rupees 235 crore as compensation to the previous owner of the land on which the Mall of India has been built. Rupees 10,618 crore production linked incentive scheme for India's textile sector attracted investment of rupees 1,536 crore as approval letters were issued to 56 applicants who met the eligibility criteria. Alembic Pharmaceutical on Monday said it has received final approval from the US health regulator for its generic fulvestrant injection used in treatment of breast cancer. Lastly, telecom operator plan to push the government to reduce levies such as license fee and contribution to the Universal Service Obligation Fund as part of the recommendation for the 2023-24 budget, besides seeking a fund of the rupees 32,000 crore input tax credit. Thank you, everyone.